Hey guys, welcome back to my channel. So today we are going to do something different which I have never done in my life. We are going for trekking and we are going to Triund trek. So for that we have to go to Meclodganj and you can take Dharamkot road as well and from Meclodganj also. So right now we are crossing the Mall road of the main road of your Meclodganj, which also called as a Mall road of Meclodganj. And Triund is a small hill station in district Kangra, Himachal Pradesh, and Triund is a part of Dharamkot, and Triund is at the foot of Dhuladhar ranges and is at a height of 2828 meters. Well, this trek starts from Dharamkot as well and from the Meclodganj main chowk as well. So we have chosen the Meclodganj route, and the distance from Meclodganj to the Triund track is 9 kilometers. So we are heading towards Meclodganj right now. You can see the road. The conditions are pretty much good and we are just going to have a lots of fun, we hope so. And so this trip has been planned by one of my family member, and that's why we are in this trip with them, with my family members, and we have 3 kids in our trip, and that's why we are very adventurous and exciting for this trip, basically mountain trekking. So let's hope how it went, and we are hoping for the best. And yeah, this is the road. And so अभी हमने मैक्लोडगंज मेन चौक से चलना स्टार्ट कर दिया है टू द वाटरफॉल. And this is the Bhagsunag temple, this is the Lord Shiva temple, and you have to pass this temple to reach the waterfall, and it has pool inside. So now we are heading towards the waterfall. That's the waterfall, huh? Say hi. Hello. वो हो जाता है राजू. Savagya, hi. Gaurik, hi. Bye. Gaurik, bye. तो वाटरफॉल हमने क्रॉस कर लिया है, और क्रॉस करने के बाद हम थोड़ी देर यहाँ पर रुक गए क्योंकि सभी की हालत ख़राब होने स्टार्ट हो गई. एंड अभी तो सफ़र बहुत ज़्यादा था हमें, बट स्टिल वी जस्ट कैरी ऑन एंड गिव अप नहीं किया, चले रहे बिकॉज अभी जस्ट स्टार्टिंग थी. एंड हमें बाया शिवा कैफ़े होके जाना होता है. सो आई शो यू दैट कैफ़े ऑल्सो. वो ऊपर है शिवा कैफ़े. यहाँ से हमें ये साइड वाला जो माउंटेन है उसको क्रॉस करना है. अब आप देख सकते हो हमारा रूट कैसा हो गया है, कैसा रास्ता हमें मिल रहा है. सो बेसिकली रास्ता है नहीं, बनाया गया है. सो वेल, दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रैकिंग इज़. सो दीज आर द तिब्बतियन फ्लैग्स, कलरफुल फ्लैग्स, एंड सनसेट इज़ अबाउट टू. सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर था. और अभी हम वहाँ नीचे से अभी ऊपर हैं.
सो आप देख सकते हो कितना भी थोड़ा डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है। एंड ऐसे ही रास्ता मिलेगा हमें। एंड चले हैं धीरे धीरे। सनसेट हो रहा था तो इट वॉज लाइक वेरी नाइस इवनिंग। ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल कंटिन्यू ही सफ़र कर रहे हैं, बीच में हम रुक भी रहे हैं। अभी आप देख सकते हो रुके हुए हैं सभी। सो सनसेट इज़ अबाउट टू एंड दिस इज़ रियली अमेजिंग। लाइक I have witnessed really something very very beautiful. So अभी हम चल रहे हैं, फ़ोटोज़ लेने का सोच रहे हैं एंड चल भी रहे हैं बिकॉज हमें अभी जाना है आगे। अब मैं आपको बताऊंगी हम कहाँ आज जा रहे हैं। दिस इज़ अबाउट टू सनसेट व्यू। सनसेट हो चुका है ऑलमोस्ट एंड अभी हम ऊपर पहुँच गए हैं थोड़ा। तो आपको दिख रहा है धर्मशाला एंड मैक्लोडगंज एंड अभी हम ऊपर हैं, काफ़ी ऊपर आ चुके हैं लाइक नीचे से। तो ऑलमोस्ट हमें शाम ही हो गई यहाँ पे बिकॉज मुझे याद है हमने ट्रैकिंग स्टार्ट करी थी 4:30 बजे। तो हम 7, 7:30 पहुँच गए थे जहाँ हमें पहुँचना था। तो अभी हम देख लो लाइट्स ऑन हो गई हैं। सो गाइस अब हम पहुँच गए हैं जहाँ पे हमारा नाइट स्टे है। ये है लेटा कैंप एंड यहाँ पे हमने नाइट स्टे करी है इन दीज कैंप्स। एंड दिस इज़ द व्यू which was really amazing, beautiful, speechless, marvelous, like it's beautiful, हाँ। सो यहाँ पे हमें किचन भी था जिनके पास हम रुके थे, लाइक जिनकी कैंपिंग थी ये। तो वी कुक्ड ourselves एज वेल एंड आपको डिनर भी मिल जाता है इनके पास, नो प्रॉब्लम। बट अगर आप बनाना चाहो तो आप बना भी सकते हो, सामान इनके पास होता है और आप अपना भी कैरी कर सकते हो। एंड लेट नाइट हमारा बॉनफायर चला, म्यूज़िक चला, डांस चला, गॉसिप्स चली, चिट चैट चली, गेम्स हमने खेली एंड इट वाज रियली फन नाइट। एंड ये साथ में जो हैं ये शायद कोलकाता से आए थे यहाँ पे। सो या अभी हो गया है डिनर का टाइम और डिनर के लिए वी हैव दाल, वी हैव सब्जी, वी हैव सैलड ऑल्सो, रोटी, राइस सब है। सो डिनर लेट नाइट बॉनफायर, म्यूज़िक, डांस, बस यही चला। इट वॉज वेरी लवली वार्म नाइट विद अस, विद देम एक्चुअली। सो एंड अ full moon night as well. So yeah guys, and please continue watching the part 2 for the Triund track जो हमने अब लेटा से ट्रिउंड के लिए जाना है, तो वो आप देखना मत भूलना। अभी हम नीचे मैक्लोडगंज मेन से लेटा तक आए हैं। तो 4:30 हम चले थे, 4, 4:30 और 7:30 पहुँच गए।